So, hello everyone. My name is Nancy Gupta. Please subscribe my channel Nancy Study. So, let's start with the topic part 2 of this chapter, motion in a straight line. Let's get started. So, we were discussing in the last class about difference between instantaneous speed and instantaneous velocity. What is the meaning of instantaneous speed and instantaneous velocity? सबसे पहले हम एवरेज स्पीड जिसको हम इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस covered by any object, it could be by me, by car or anything, divided by total distance covered by total time. This gives average velocity. And instantaneous velocity मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज का velocity एक particular instant, ठीक है। Average velocity has the direction of motion. Instantaneous velocity has the speed and direction of the moving object at a particular instant. Average speed is the total distance traveled divided by total time of travel. And instantaneous speed is the speed at a given moment. In a moving car, instantaneous speed could be determined from the speedometer. Now let's understand about acceleration. What is acceleration? Acceleration means speed is equal to, for example अगर हम इस example में देखें, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें आपको एक कार दिख रही है जिसका स्पीड है 30 माइल्स पर आवर, पर 1 second later क्या देखा गया? Speed is equal to 32 miles per hour. That is, its velocity has increased in the very next second. So that is acceleration, change in velocity. Here you can see in this picture the car is slowing down. That is its velocity is, yes, its acceleration is decreasing. But if the car is speeding up, that means its velocity is decreasing. ठीक है, जैसे जैसे ये कार जा रही थी, आगे बढ़ रही थी, उसका कार स्लो डाउन हो रहा था, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा था। पर इस केस में जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो कार स्पीड अप हो रहा था। इट मीन्स उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा था। इफ टू एथलीट्स आर रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड एथलीट ए रीचेस फर्स्ट, ठीक है, एक ही जगह से दो एथलीट साथ में रन करना शुरू किए। एथलीट ए पहले पहुंच गया और एथलीट बी, ठीक है, एथलीट बी धीरे बाद में पहुंचा। तो whose acceleration is more? Acceleration is the change of velocity with me. An average acceleration over a time interval is defined as change of velocity divided by the time interval. And similar to instantaneous velocity, instantaneous acceleration is when the time interval tends to zero. Kinematic equations for the uniformly accelerated motion. So now let's discuss about three equations of motion. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2AS, and S is equal to the same equation. S is equal to half U plus V into T. So let's discuss these equations one by one. Equation 1. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. Equation 2. Displacement, that is S, is equal to ut plus half h square. And last equation, v square is equal to u square plus 2as. So these are three equations of motion where a is equal to acceleration, v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, t is equal to time taken, and s is the displacement. Now let's discuss some practical examples of motion in a straight line. Free fall. A ball released near the surface of earth is accelerated downward under the force of gravity. जब भी हम कोई बॉल को रिलीज करते हैं, ठीक है,
सरफेस ऑफ अर्थ के पास से। ठीक है, तो तुरंत एकदम से स्पीड में अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो चला जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and in that case object is said to be in free fall. Next, stopping distance of vehicle. जब हम कोई चीज पे ब्रेक अप्लाई करते हैं मूविंग व्हीकल पे, तो द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग, जो स्टॉप होने के पहले व्हीकल स्टॉप होने के पहले जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल. It depends upon initial velocity and the acceleration रिलेटिव वेलोसिटी. सपोज यू आर ऑन स्कूल बस, आप स्कूल बस में हो और आपका बस 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहा है, एंड ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, सडनली सम अदर बस स्टार्ट्स रनिंग अलोंग द सेम स्पीड एज योर बस. सेम स्पीड में दूसरा बस भी रन करने लगा. आपको लगेगा कि अरे मेरा बस चल रहा है कि नहीं चल. ठीक है, जब दो बस एक साथ एक स्पीड में चल रहा है पैरेलल, ठीक है, तो एक दूसरे दोनों बस वालों को लगेगा कि अरे कहीं मेरी बस चल रही है कि नहीं चल रही, तुम्हें फील. बट समवन फ्रॉम द रोड, कोई रोड पे अगर खड़ा होगा तो वो इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएगा, यस both the buses are running at a speed of 40 meter per second. Hence the second bus is running at 0 meter per second with respect to your bus, but running at a speed of 40 meter per second with respect to the ground. ठीक है, so this was all about motion in a straight line. We will come out for this topic in the very next video. So till then, bye bye, take care, thank you, and have a nice day.